Good afternoon, dear students. Myself, Neeta Kalra. I am working as a senior lecturer from SRS GPCG Ludhiana. So today my topic is feasibility study, and we will cover in this introduction and overview of the feasibility study, in which the contents of the feasibility study is, first of all, we will discuss the introduction of the feasibility, in which we will cover technical feasibility, economical feasibility, operational feasibility. After that, we will discuss cost and benefit analysis, and then the benefits of the system, in which we will discuss the tangible benefits and the intangible benefits. So, before starting the what is the basically meaning of the feasibility, as we know, an important outcome of the preliminary investigation is the determination. जैसे कि हमें पता है कि इससे पहले हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कवर अप किया है द प्रिमिलरी इन्वेस्टिगेशन. सो उसका मतलब क्या होता है? द प्रिमिलरी इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ द डिटर्मिनेशन दैट द सिस्टम रिक्वेस्ट इज़ फिजिबल. मीन्स कि जो यूज़र है, जो क्या उसका जो सिस्टम है, जब उसकी डिटर्मिनेशन है क्या वो सिस्टम रिक्वेस्ट है वो फिजिबल है या नहीं है. सो द फिजिबिलिटी इज़ means the feasibility is the determination of whether or not a project is worth doing. The process that is followed in making this determination, that is called the feasibility. So again I am repeating, the feasibility means the process that is followed in making this determination is called feasibility, right? So the objective of the feasibility study, that means to assure that is the alternative systems, so that the most feasible system for the development process that can be proposed. So again we can say that the feasibility study is defined as an evaluation and analysis of the potential of the proposed project or the program. Again I am repeating, the feasibility study that is defined as an evaluation or the analysis, means how to analyze or how to evaluate the your system of the potential of the proposed project or the program. So we can say also that the feasibility study is used to help for making the decision makers in determining whether or not to implement a particular project or a program. मीन्स कि अगर वो फिजिबिलिटी, अगर क्या वो कोई भी हम प्रोजेक्ट जहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या उसमें वो हेल्प कर रहा है, क्या हम ये प्रोजेक्ट जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है. देन अगेन आई एम रिपीटिंग, द फिजिबिलिटी स्टडी दैट इज यूज टू हेल्प डिसीजन मेकर्स इन डिटर्मिनिंग वेदर और नॉट टू इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और ए प्रोग्राम. So there are two basic questions that is need to be answered with the feasibility analysis. These are, means, is there sufficient demand for the product or the service, or you can say, or can the product or service be provided on a profitable basis. हम लोग सिस्टम क्यों स्टार्ट करते हैं? मीन्स हम लोग क्या जो डिमांड आ रही है क्या वो सफिशेंट है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, या जो द प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसके क्या उससे हमें बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा. So objectives of the feasibility studies means to identify the problems in the current system, means जो current system है उसमें हम problems को identify करते हैं कि क्या problems हैं, and next to determining objectives of the proposed system, मीन्स कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. हम जो फिजिबिलिटी स्टडी हम यूज़ करते हैं, मीन्स सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, करंट सिस्टम्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने उसको कैसे सॉल्व करना है. सो the next is to determine whether it is a good decision to develop a new system. या तो होता है कि हम सिस्टम क्यों क्रिएट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल या तो सिस्टम हम क्रिएट करते हैं कि ये या तो एक है कि हमने न्यू सिस्टम क्रिएट करना है, या जो ऑलरेडी है करंट सिस्टम है उसको आपने फर्दर डेवलप करना है. और यू कैन से टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन, टू एक्वायर ए सेंस ऑफ स्कोप ऑफ द सिस्टम. There is some or more questions are there. That's just like that. Can this system meet the requirement business needs, or you can say is it suitable for the use of system development process, or you can say what are the risks that is involved in the system, or you can say also, means the question is the problem associated with the system worth solving.
So the study that should be relatively brief, as the purpose of this stage is only to get an idea of the scope of the project. So the objective of the feasibility study is to assess alternative systems so that the most feasible system for the development process can be processed. Again, I am repeating, the objective of the feasibility study means is to assess the alternative systems so that the most feasible system for the development process can be processed. So feasibility studies. The next is the types of the feasibility study. So this is a chart, basically the feasibility study, in which we will cover the management feasibility, organizational, or you can say the behavioral feasibility, economic feasibility, technical feasibility, legal feasibility, social feasibility, time feasibility, and operational feasibility. In the feasibility, three main types, they are very important, means technical feasibility, economical feasibility, and the operational feasibility. So first of all, we will discuss the technical feasibility. So technical feasibility means, that is the major concern of the technical feasibility is to observe whether the reliability, hardware or software of the organization that meets the needs of the proposed system or not. क्या जो आपके सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा. सो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, द एनालिस्ट studies the existing systems, means just like that is related to, maybe related to your hardware or software, that is maybe related to the reliability of the hardware or software, you can say, and determines whether these technical resources are sufficient and proposed systems or not. So if not, then sufficient, if not the sufficient, then analysis suggests the configuration of the proposed system. मीन्स अगर बात करें कि एनालिस्ट ने अगर देखा कि ये आपके सिस्टम के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, क्या अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो सफिशिएंट है या नहीं है. अगर नहीं है, देन एनालिस्ट क्या करता है, दैट कैन सुजेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रपोज सिस्टम, कि आपका जो प्रपोज सिस्टम है उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशंस अभी प्रेजेंटली चाहिए. एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट्स कैन बी डेवलप इन द रिक्वायर्ड टाइम. मीन्स जो आपका टारगेट है उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब अचीव करना है, क्या वो रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग टू वो उस रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करता है या नहीं करता है. या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कैन दिस सिस्टम बी एक्सपेंडेड और इज इट फ्लेक्सिबल. टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम लोग ये भी कंसिडर करते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंडेड हो सकता है, या वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें या नहीं है. Yeah, the proposed system that provides a technical security, means just such as accuracy, reliability, accessibility and data security, right. So the proposed system that provide technical securities just like your accuracy, the reliability, accessibility and the data security. So technical feasibility checks or finds out two major issues. These major issues are, means is the proposed technology or solutions practical, क्या जो आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो क्या वो प्रैक्टिकली साउंड है या नहीं है. एंड द व्हाट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी नीड, क्या वो प्रेजेंटली जो आपकी सिस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग टू वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, क्या वो मीट कर रही है आपकी रिक्वायरमेंट को, आपके सिस्टम को मीट कर रही है या नहीं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, there is basically technical feasibility that checks or find out two major issues. First is the proposed technology or the solution practical, or what kind of technologies will be needed. So this issue is basically checks out the following points. These are the, do we currently possess the necessary technology, या do we possess the necessary expertise, or is the current technology that we house is enough to be easily applied to our problem. So, or you can say, does the company have the technologies resources to undertake the project, are the processes and procedures conduct to the project success. So next is the your
economical feasibility. So before starting this, again I am repeating, the technical feasibility means technical feasibility that observe the whether the reliability, or you can say that is related to your hardware or software of the organization, that meets the need of your proposed system or not. Or it can also determines if the requirements can be developed in the required time, right. So the next is your economical feasibility study. Economical feasibility study means that is very important part of this feasibility study. The reason is the feasibility that means that can related to the cost of the system. The cost and returns are evaluated and are evaluated. So it is determined whether the returns justify the investment which was planned in the system object or not. So it is most important important study. It can deals the economic of the system projects. So it determines the cost and benefits of the proposed system. मीन्स हम चाहते क्या हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो फिजिबल है, हम क्या चाहते हैं कि ये सब मिनिमम कॉस्ट लगे और हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले. So it determines economic feasibility, it determines the cost and benefits of the proposed system and compares with the proposed budget, right. It is determined whether the returns justify the investment which was planned. क्या जो आपने प्लान किया है क्या वो उसको जस्टिफाई, इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, ठीक है, राइट. द कोस्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. और ये हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं द कोस्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर दैट इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशंस ऑफ द सिस्टम्स, और द बेनिफिट्स जस्ट लाइक द रिड्यूस द कॉस्ट, इम्प्रूव्ड customer services, or you can say the improve the customer utilization, ठीक है. As the economic feasibility assess cost and benefits of the system, so cost benefit system analysis that is performed for it. So economical feasibility that uses several methods to perform cost analysis, just like your payback analysis, or you can say the return on investment, or the you can say the present value analysis. We will discuss later. So again I am repeating, economical feasibility that is determines the cost and benefits of the proposed system, and that can compare with the your proposed budget, or it can determine, it is determined whether the returns justify the investment which was planned. So this feasibility having some questions to answer means, is the project justified, that is it will return, will it give some profits, or how soon will the profit start, or you can say the benefit start. मीन्स कि हम कितना आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने अपने प्रोजेक्ट पे, क्या हमें वो जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है आपको कि नहीं, या जो आपको बेनिफिट्स है वो कितनी जल्दी आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. सो नेक्स्ट इज द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. सो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी means that is responsible for the operations of the management employees, customers and suppliers, that these people they are involved in the project. So operational feasibility, again I am repeating this thing, that the operational feasibility of the management employees, that is related to management employees, your customers and the suppliers, those people who are involved in the directly involved in the project. So it also determines the use of and the support of the proposed system, right. Or you can say the feasibility study, operational feasibility study, that can examine the system operation while developing and installing the system, right. So operational feasibility means it is determined whether the system will operate in the way that the user wants or not. क्या जो सिस्टम आप स्टार्ट कर रहे हो क्या उस ढंग से ऑपरेट हो रहा है, उस ढंग से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिस ढंग से यूजर चाहता है, ठीक है. इट मस्ट डिटरमाइन हाउ द प्रपोज सिस्टम विल फिट इन विद द करंट ऑपरेशंस. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, customers and suppliers that these are involved in the project, or it can examine the system operations while developing and installing the system.
So how do end user and managers feel about the problem you identify, the alternative solution you provide? Means कि जो आपके सिस्टम को सिस्टम के एग्जिस्टिंग सिस्टम में या न्यू सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करना, जो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं और उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढना. So these are the important the user and managers they can feel about the operational feasibility means, or you can say the feasibility study means the problem you identify and the alternative solution which you can provide. Or you can say also the will the implementation of the project be done smoothly, क्या जो आपका सिस्टम है वो स्मूथली चल रहा है, राइट जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या उनके अल्टरनेटिव साथ हैं आपके, या will the management employees customers and suppliers you can say that can provide adequate support to the project, or the will the existing business methods be acceptable by the user, राइट कि जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो उसमें आप मेथड्स अप्लाई कर रहे हो क्या वो यूज़र उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं. और यू कैन से यू मस्ट ऑल्सो इवेल्युएट नॉट जस्ट वेदर ए सिस्टम कैन वर्क बट ऑल्सो वेदर ए सिस्टम विल वर्क. जो सिस्टम प्रेजेंटली चल रहा है क्या वो इवेल्युएट कर क्या वो काम कर रहा है या आगे इन फ्यूचर में करेगा. इट कैन ऑल्सो चेक्स आउट डज मैनेजमेंट सपोर्ट दैट प्रोजेक्ट. सो the proposed system means the operational system means the implementation of the project that can be done smoothly in this operational feasibility, and or you can say the management employees or the customer you can say they can provide the support to the project, or you can say the existing business जो methods हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या यूज़र की तरफ से वो acceptable हैं या नहीं है. So the proposed system that can also be assessed by you can say the system that is being developed as per the rules and regulations. जो आप सिस्टम को डेवलप कर रहे हो क्या अकॉर्डिंग टू योर रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं, रूल एंड रेगुलेशन कह सकते हो या उसमें लॉज कह सकते हो या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कह सकते हो या यूनियन एग्रीमेंट्स कह सकते हो, राइट या कि यूजर्स एक्टिविटीज़ जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या जो उसमें यूज़र की एक्टिविटी कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, या ये कह सकते हो कि सिस्टम क्या है जो वो लीगली फिजिबल है या नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम शेड्यूल जो है फिजिबिलिटी वो क्या पॉसिबल है या नहीं है. सो नेक्स्ट इज योर social feasibility. Social feasibility as name shows that it determines of whether a proposed system project will be acceptable to the people or not. राइट कि जो आप सिस्टम बना रहे हो वो क्या पब्लिकली या पीपल की तरफ से या यूजर की तरफ से वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, राइट. इट इज़ ए डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर ए प्रपोज प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल और नॉट. Or you can say that determination typically examine the probability of project being accepted by the group, right. So again I am repeating the social feasibility. For social feasibility means that is related to your project is that is directly related to the people's means or the user you can say, means it is determination of whether a proposed project will be acceptable to the people or not, or the determination typically examines the probability of the project being accepted by the group. So next is your management feasibility. Management feasibility means that is related to the management of the system. It is determination of whether a proposed project will be acceptable to the management or not. मीन्स क्या करते हैं कि जो भी सिस्टम बनाते हैं आप सिस्टम को वो मैनेजमेंट देखती है कि येस दिस सिस्टम इज़ फिजिबल और नॉट. अगर उनको लगता है कि येस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ये सिस्टम जो है वो स्मूथली रन कर सकता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो सिस्टम है उसको मैनेजमेंट उसको ओके करेगा, देन वो फर्दर क्या है कि उसके यूज़ कर सकते हैं. या ये भी कह सकते हो कि अगर तुम मैनेजमेंट अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी क्या है कि ये आपका जो सिस्टम है उसको सपोर्ट नहीं करता. सो इट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द प्रपोज प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल टू द मैनेजमेंट और नॉट, that is directly related to the management of the system.
if not, it is considered to be not feasible or non-feasible, you can say. So a project can be considered to be feasible only if it passes all the tests. मीन्स अगर मैनेजमेंट उसको ओवरऑल सारा क्लियर कर देता है, जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसकी फिजिबिलिटीज है, सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, देन उसको कह सकते हैं कि येस दिस इज फिजिबिलिटी, दिस सिस्टम इज फिजिबल. अगर नहीं देन उस दैट इज कॉल्ड योर नॉन फिजिबल. सो इनफिजिबल प्रोजेक्ट्स आर डिस्कार्टेड अदरवाइज. So next is the time or schedule feasibility. It is determination of whether a proposed project can be implemented fully within given time frame or not. क्या टाइम शेड्यूलिंग, टाइम और शेड्यूल फिजिबिलिटी मीन्स कि जो आपका सिस्टम है, प्रपोज सिस्टम है, क्या उसकी जो आउटपुट है वो विद इन टाइम हो रही है या नहीं है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन विद इन टाइम है या नहीं है. इफ प्रोजेक्ट टेक्स टू मच टाइम इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट फिजिबल, राइट. अगर वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है एंड इट विल टेक मोर टाइम, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नॉट फिजिबल. Again I am repeating, the time feasibility or you can say the schedule feasibility, it is determination of whether a proposed project that can be implemented fully within given time frame or not. If the project that can take too much time, it is considered to be not feasible, right. So next is your legal feasibility. Legal feasibility means viability of the system, you can say. Or other words you can say the legal feasibility means verifies whether the system abides by all the laws or regulations or not. मीन लीगल फिजिबिलिटी क्या इतनी इसकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं. सो दीज proposed project abides by all the laws and regulations or not. So next is the feasibility study. Again I am showing that diagram for the types of the feasibility study. In which we will cover the legal feasibility. First is technical feasibility, operational feasibility, economical feasibility. These three phases, they are very important types of the feasibility study: economical feasibility, technical feasibility, operational feasibility. And then rest of the legal, just like we already discussed, the legal feasibility, schedule feasibility, social feasibility, management feasibility. So next we will cover this is the steps in feasibility study. हम लोगों ने अभी कवर किया द टाइप्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिबिलिटी होती क्या है, देन उस द टाइप्स ऑफ द फिजिबिलिटी, देन नेक्स्ट द स्टेप्स इन फिजिबिलिटी स्टडी. So steps in feasibility analysis: form a project team and appoint a project leader, right. The steps we can follow for the feasibility analysis: first of all, form a project team and appoint a project leader. Second, and prepare a system flow charts. All the things we can discuss through the flow charts. Enumerate potential candidate system एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट टीम बनाते हैं और उसका एक प्रोजेक्ट लीडर बनाते हैं, जिसके अंडर जो द रेस्ट ऑफ द पीपल्स हो दोज आर एक्सपर्टीज इन देयर प्रोजेक्ट, इन देयर फील्ड. वी कैन फॉर्म द प्रोजेक्ट टीम एंड अपॉइंट ए प्रोजेक्ट लीडर. दैन नेक्स्ट, देन we can prepare the system through the flow charts and enumerate potential candidate system, and then after that we can select the best candidate system.
So next is the determine and evaluate performance and cost effectiveness. That is very important. हम लोग सिस्टम कोई भी तभी फिजिबल होता है अगर उसकी परफॉर्मेंस और कोस्ट जो है वो इवेल्यूएट हो. और द वेट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कोस्ट डेटा. So described and identify characteristics of candidate system or prepare the report of final project, right? Again I am repeating all these steps for the feasibility analysis. Means form a project team and appoint a project leader, then we can prepare the flow charts, then enumerate potential candidate system, and then we can select the best candidate system, then we can determine or evaluate the performance and cost of effectiveness and the weight system performance and cost data. Okay? And then describe and identify the characteristics of the candidate system, and then finally we can prepare the report of the final project. Okay? So contents of the feasibility report are, these are means the language that should be non-technical, the estimated cost of the system, and who is in the organization will be involved in the operating it, right? Contents of the feasibility reports are, means report में क्या होता है feasible report में, means कि the language that should be non-technical, the estimate cost of the system, and who is in the organization will be involved in the operating, right? The organizational changes need for successful implementation, the benefits which the system will give, and what the proposed system will achieve, right? The organizational changes that needed for successful implementation, and the benefits which the system will give, and what the proposed system will achieve, right? The next is cost benefit analysis. So cost and benefit analysis, this is very important, that plays very important role in deciding the new system, and it must be identified and estimated properly, right? So cost varies by the types and consistent of the various distinct elements that can depend on the different elements, and benefits that are also of different types that can be grouped on the basis of advantages and provided to the management, right? So cost benefit analysis means is a way to check the economic feasibility of the project, and the cost benefit analysis that is concerned with how the cost and the benefits of the system are analyzed, right? Then after knowing the cost of the system, the comparison is made with the benefits provided by the system. Yes, हम लोग क्या करते हैं, या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को कंपेयर करते हैं, या अगर कोई नया सिस्टम हम क्रिएट करें उसको कंपेयर करते हैं पुराने सिस्टम के साथ. So after knowing the cost of the system, the comparison is made with the benefit that is provided by the system. The main objective is to find out whether it is economically worth while to invest in the proposed system or not, right? So first of all, cost that can be determined when comparison is made. So the next is the economically worth, is it that can be invested in the proposed system or not. So calculating the cost of the system, आप इसमें ये भी कह सकते हो द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट दैट शुड contains means finding the conclusion of the system of the study, or you can say the description of the work done in the feasibility study. हम लोग इसमें रिपोर्ट्स में क्या बनाते हैं कि ये द कंक्लूजन स्टडी के लिए या डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, राइट? देन calculating the cost of the system. The cost incurred on the system are classified into two categories. First are the costs that are associated with the development of the system, and second type means the costs that are related to the operation of the system. ठीक है, first part of the cost is that is associated with the development of the system, कि system की कितनी development हो रही है, right? Then second part है that is related to the operation of the system, कि system जो है वो कितना operationally work कर रहा है. Then next is the cost associated with developing a system can be estimated from the outset of a project, and they should be defined at the end of each phase of the project.
The next is the cost related to the operations of the system can only be estimated after specific computer based solutions have been defined. So, next is the types of the cost related to the systems. First is system development and second is operational cost. As we already discussed these things, means these cost is related to the system development